Hello, everyone, and thank you for joining us today for our webinar on the health impacts of early and child marriages. We are introducing our speakers for today. We have Senator Aisha Raza Farooq. She is a member of the Pakistan Muslim League Nawaz and was formerly the Prime Minister's focal person for polio eradication. Currently, she is the chairperson for the National Commission on the Rights of the Child. Then we have Azbanaz. She is a clinical psychologist with over 6 years of professional practice and experience at the Mukhtar A. Sheikh Hospital in Multan under her belt. And lastly, we will be joined by Dr. Munize Bano. She is a educationist. She has a doctorate in special education, and she is the executive director of Sahil, a non-government organization working on child protection, with special focus on child sexual abuse. Dr. Munize Bano will join us slightly later today, and we will enter her into the stream once she has joined us. And thank you, everyone, for taking time to join us today. We will firstly begin with Senator Aisha Raza Farooq. So, ma'am, we need to ask that what measures currently are being taken by the state, by government institutions to raise awareness among communities about the negative consequences or negative impacts of early and child marriages. This could be health impacts as well as the social and economic constraints and issues. Thank you, Asra. I'd like to congratulate you for convening this very, very important session on the health and economic and social hazards of child marriages. Now, before we go on to look at what steps are useful and what have been taken in the past to counter child marriages, I think it's imperative to take a minute or two to look at the drivers that lead to child marriages. And उसमें से कुछ हमें जवाब मिलेंगे of how we can, as from the government side or from civil society side, do our work even better. तो उसमें आप देखते हैं कि gender inequality और patriarchy जो है वो is one of the driving forces there. Then we see the traditional customs जो दकिया नूसी हमारे customs हैं बट्टा सट्टा स्वारा कि बच्ची पैदा होते ही different tribe या different families में उसका रिश्ता कर दिया जाता है. There's poverty and lack of security. Many times parents just want कि जो अपना बच्चों का जिम्मेदारी है वो किसी और family के ऊपर डाल दें. That's why they're married off as soon as they reach the age of puberty. Then there's lack of awareness really and of what benefits of education can actually entail and help break the cycle of poverty जिसकी जो एक driver खुद बन रहा है child marriages में. And then religion also in surveys has been cited as a factor to prevent them from sinful acts and so forth. Now, the government of Pakistan has tried to raise, and civil society has, we are at the NCRC trying to create awareness, to push legislators across the country to raise the minimum age of marriage to 18 years. अभी सवाए आपके सूबा सिंध में पूरे मुल्क में जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है वो 1929 का बहुत दकियानूसी पुराना कानून नाफिज है जिसमें लड़कियों की एज ऑफ मैरिज जो है मिनिमम वो 16 साल दी जाती है और लड़कों की 18 साल. I think it's imperative that we raise our voices, civil society, as individuals, as citizens, as mothers, as legislators, policy makers, कि ये फौरी तौर पे हमें लेजिस्लेशन लाके we've got to convince our legislators and political parties कि एज 18 साल की जाए. सिंध इज द ओनली प्रोविंस जहाँ पे फिलहाल 18 साल यहाँ है. देन अगर आप लेजिस्लेशन को ले भी आए, देयर आर इंस्टेंसेस एंड कंट्रीज सच एज बांग्लादेश जहाँ पे नेशनल लॉ है कि मिनिमम एज 18 साल होगी, लेकिन देखने में आया है कि उसके बावजूद 18 साल से कम बच्चियों की शादियां होती हैं. एंड बांग्लादेश इज वन द कंट्री इन दिस रीजन विद द हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ चाइल्ड मैरिजेस. सो यकीनी तौर पे लेजिस्लेशन सर्टनली इज इम्पेरेटिव, इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन लेजिस्लेशन के साथ साथ आई थिंक बहुत जरूरी है कि हम आगाही फैलाएं, एडवोकेसी करें, अवेयरनेस क्रिएट करें, नॉट एट द ओनली एट द फेडरल एंड द प्रोविंशियल लेवल, but we need to carry this forward at the grassroots level, अपने communities के पे लेके जाएं. One shoe does not fit all. So we need to engage our religious scholars, जहाँ पे वो are influencers in families or communities. We need to engage doctors, gynecologists, pediatricians. We need to engage tribal elders, जहाँ पे उनकी बात सुनी जाती है ताकि उनको बताया जाए कि इसका economic, social
और हेल्थ इम्पैक्ट क्या है. एंड आई थिंक यू हैव अ डॉक्टर ऑन द पैनल हु विल एडवाइज यू मोर, बट सम फिगर्स दैट आई हैव शो वेरी क्लियरली कि जब आप एक बच्ची की अंडर एज शादी करते हैं, शी इज ट्वाइस एज लाइकली एज ओल्डर विमेन, twice as likely to die in childbirth. I don't know how many people are aware of this. Then there's a very high risk that when you have a child marriage, underage बच्ची जब pregnant होती है, तो the chances of fistula and complications thereof increase manifold times. ये लोगों को पता नहीं है. And child brides are 60% more likely to die in the first year of life. Children of child brides, sorry, are 60% more likely to die in their first year of birth. Now, these are very, very high percentages by any rate. और अभी हाल ही में as chairperson National Commission on the Rights of Child and also as chairperson of the Statutory Committee on Anti-Rape Legislation, हम लोग provinces में जाके UN Women और UNFPA के support से और सूबाई हुकूमतों के support से हम ये आगाही फैला रहे हैं. और UN Women ने पहली दफा religious scholars को जाके तस्वीरें दिखाई कि fistula, what does fistula look like and what do we mean when we talk about the risk of fistula here. So जिस तरह के हमारे cultural norms हैं और हमारी societies हैं which are conservative, वहाँ पे वालिदैन को especially जो fathers हैं उनको of child brides, उनको ये मालूम नहीं कि ना उनकी वालिदा ऐसे ही बताती हैं उनसे कि आप क्या रिस्क में डाल रहे हैं जब एक बच्ची की जल्दी शादी कर देते हैं और यकीनी तौर पे वो जल्दी अर्ली चाइल्ड मदर बन जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो किस किस्म के आप हैजर्ड से उनको गुजार रहे हैं. दिस इज जस्ट द कॉम्प्लिकेशन ऑन द हेल्थ साइड. इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें तो वो और भी ज्यादा है. एंड इट्स डॉक्यूमेंटेड फैक्ट दैट girls who marry before the age of 15 are more prone to physical and sexual violence in a marriage. They're not completely developed emotionally, वो उसका stand नहीं ले सकती हैं. So ये सब चीजें perpetuate हो जाती हैं when she is wedded off earlier, when she becomes a mother early, she is more prone to abuse and becomes more economic vulnerable. So जो ये parents बच्चों की जल्दी शादी करके जो ये poverty की cycle अपनी तरफ से break करने की कोशिश कर रही हैं, and it doesn't break the cycle at all. So I think आगाही बहुत जरूरी है. आपके प्रोग्राम्स के जरिए, मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को साथ लेकर चल के कि जितनी आगाही फैलाई जाए. लेजिस्लेशन पर से is not important. सिंध में भी लेजिस्लेशन है एंड यकीनी तौर पे उसके बावजूद बहुत से केसेस हमारे सामने आते हैं. सो बच्चों को स्कूलों में डालें, उनको एजुकेशन दें ताकि बच्चियां भी उसी तरह एक खानदान की अर्निंग प्रोडक्टिव मेंबर्स बने जैसे कि बच्चे बन सकते हैं, मेल चाइल्ड बन सकता है. Okay, heading over to Dr. Azbanas. Ma'am, since Senator Aisha Raza Farooq, she presented us with some statistics, especially on the psychological and physical negative consequences for very, very young brides and mothers. So, considering your practice, how have you seen our children or very young women, how are they impacted when they are suddenly thrust into these adult roles जिसके अंदर इनके को यानी कि familial obligations और sexual obligations उनको fulfill करनी होती हैं. So thank you so much for inviting me. I will definitely second Aisha Raza Farooq Saiba for this, the statistics. इसमें जो इम्पैक्ट है वो एडल्ट रोल्स का, वो डेफिनेटली उसमें दो फैक्टर्स आ जाते हैं. फर्स्ट इज़ पेरेंटिफिकेशन एंड सेकंड इज साइकोलॉजिकल. जब हम किसी भी बच्चे को डेफिनेटली आप एडल्ट रोल में आप उसको इंडल्ज करेंगे, रादर कीपिंग देम स्टेप बाय स्टेप. क्या उनकी हार्मोनल चेंजेस होती हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, ब्रेन डेवलपमेंट होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हार्मोनल चेंजेस होती हैं. आप स्टेप बाय स्टेप एक बच्चे को नहीं लेके जा रहे और आप सडनली उसे एक एडल्ट रोल में ऐड करें तो डेफिनेटली दैट इम्पैक्ट इन देम इन हायर रिस्क. और डिप्रेशन और जो एंजाइटी है वो बेसिकली इनमें ज़्यादा हमें नज़र आई है जिनको पेरेंटिफिकेशन में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई एडल्ट सिबलिंग है, कोई बड़ा बहन भाई है, वो आपका पेरेंट रोल शुरू से ही वो कर रहा होता है कि आपके छोटे जो सिबलिंग्स होते हैं उनको वो एज ए पेरेंट उनको ट्रीट कर रहा होता है, छोटे सिबलिंग्स को केटर कर रहा होता है, हाउस चोर्स में इंडल्ज होता है. क्योंकि नॉर्मल एक हमारा जो फैक्टर है वो इसमें यही है कि जो मेल है वो
शुरू से उनकी जो अपब्रिंगिंग होती है उसी तरह से होती है कि दे वुड बी राइट हैंड ऑफ देयर फादर, एंड जो फीमेल्स हैं दे वुड बी राइट हैंड ऑफ देयर मदर, तो दे वुड स्टार्ट गोइंग अकॉर्डिंग टू दैट जो एक कल्चरल नॉर्म्स और एक सोसाइटी ऑलरेडी सेट है। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ पर डेफिनेटली आता है बच्चों पे। आप अर्ली मैरिजेस में आप उनको इंडल्ज करेंगे, उनको बेसिक एजुकेशन नहीं है हाउ टू हैंडल सो मेनी स्ट्रेसेस, क्योंकि जो मैरिज है वो स्टिल इज़ द फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ द डिप्रेशन, क्योंकि उसमें रिलेशनशिप हैंडलिंग इज़ डिफ़िकल्ट। आपके साथ में हार्मोनल चेंजेस भी चल रहे होते हैं, रिलेशनशिप हैंडलिंग भी चल रही होती है, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दैम टू प्रोसेस विद द होल सिचुएशन कि आपने उन स्ट्रेसर्स को हैंडल कैसे करना है उस टाइम पे। एक नॉर्मल एक 14 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, डेफिनेटली दे वुड बी लाइक मोर इनटू डेवलपमेंटल स्टेज। आप उसको एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ऐड कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो हैंडल करें जिसमें हमारे यहाँ पे एजुकेशन भी उस तरह से नहीं प्रोवाइड की जाती है। बहुत सारे बच्चे तो स्कूल्स में भी नहीं जाते हैं। बहुत सारे बच्चों के लिए, जो पेरेंट्स के लिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि बेटी है तो उसको घर के पूरे काम आने चाहिए, क्योंकि वो उसमें फ्यूचर देखते हैं कि अच्छा फ्यूचर में यही सब चीज़ें करनी है। सो डेफिनेटली दे जस्ट लाइक रेज देम अकॉर्डिंग टू द सोसाइटल नॉर्म्स के अच्छा ठीक है आगे सोसाइटी में चलना क्या है। सोसाइटी में तो यही चलना है कि जो फीमेल होगी, जो बच्ची होगी, उसने आगे जाके घर संभालना है, तो वो उसको रेज ही उसी तरह से किया जाता है। उसका वो जो कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप जो अपने चाइल्डहुड से एडल्टहुड, एडोलेसेंस से एडल्टहुड, वो कहीं ना कहीं ओवरलैप हो जाता है और डायरेक्टली वो एडल्ट रोल में आ जाते हैं, जिसमें बेसिक जो फ्लॉ नजर आते हैं दैट इज द एजुकेशन। There was a slight interruption, but you can continue. All right. So definitely उसमें जो फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंटली ब्रेन डेवलपमेंट जो है दैट इज वो एक ट्रांजिशन है जिसको स्टेप बाय स्टेप ही मूव करना होता है। एक चीज़ को आप सडनली मूव कराएंगे तो डेफिनेटली उसका हायर इम्पैक्ट होगा मेंटल हेल्थ पे। और एनजाइटी और डिप्रेशन में इफ़ आई वुड से 50% जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो स्टार्ट ही इसी तरह से होते हैं कि जब आप स्ट्रेसर्स को हैंडल नहीं कर पा रहे होते। Okay. Getting back to Senator Aisha Faro, let's say कि अभी जो state है, that is what people look towards as their first, responsive body. So how can just the general public and civil society organizations, academia, police, other institutions, how can they collaborate with the government as well as bodies such as the National Commission on the Rights of the Child to address and eradicate early child marriages in Pakistan? देखिए, सबसे पहले तो एज आई सेड कानून को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और एनसीआरसी ने बड़ी अच्छी पॉलिसी ब्रीफ बनाई हुई है ऑन द लीगल फ्रेमवर्क ऑन चाइल्ड मैरिजेस इन पाकिस्तान, जो कि सारे जो गैप्स हैं आइडेंटिफाई करती है अक्रॉस पाकिस्तान। एक तो यूनिफॉर्मिटी और हार्मोनाइज करने की ज़रूरत है कानून को अक्रॉस। फिर जो कानून आपका जहाँ पे 16 साल कहता भी है चाइल्ड मैरिज, गर्ल चाइल्ड की मैरिज को, वो निफाज उसका उस तरह नहीं होता। तो वो जो पनिशमेंट्स कानून में दी गई हैं उनको और सख्त करने की ज़रूरत है। निकाह रजिस्ट्रार्स और निकाह खवान जो हैं उनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है यहाँ पे एक बहुत ज़रूरत है कि हम बर्थ रजिस्ट्रेशन की तरफ ध्यान दें और ये लाजमी करार दें कि जो CNIC नंबर है वो गर्ल चाइल्ड का निकाह नामा पे लिखा जाए। उससे एटलीस्ट कानून का निफाज जो है वो बेहतर हो जाएगा और जरा लाजमी तौर पे उसको फॉलो किया जाएगा। अदरवाइज तो निकाह खवान या पेरेंट्स जो एज लिखवाएंगे उम्र बच्ची की वो उसमें लिखी जाएगी। सो इवन इफ शी इज 15 दे राइट 16, दे नो देयर इज नो वे ऑफ वेरीफाइंग व्हाट हर रियल एज इज, जहां पे 16 साल इज द मिनिमम एज राइट नाउ। तो और इस कानून को फिर लागू करने के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की जाहिर है जरूरत है, सूबाई हुकूमतों की, लोकल गवर्नमेंट्स को बहुत जरूरी है कि वो अपना किरदार कम्युनिटी लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे इसके बारे में प्ले करें। The other side that I said, where you have to engage communities and do advocacy और उनको आप बताएं harmful effects क्या हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन साथ मिलें, जैसा कि यहाँ कहा गया इसके मेंटल हेल्थ पे क्या, इसके इमोशनल हेल्थ पे क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इस डॉक्यूमेंटेड फिजिकल हेल्थ के ऊपर। और आपके इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, आपको पता है 11% डिफरेंस है फर्टिलिटी के फॉर थ्री और मोर चिल्ड्रन बिटवीन चाइल्ड ब्राइड्स एंड नॉन चाइल्ड ब्राइड्स। कि जब एक चाइल्ड ब्राइड होती है तो वहां पे ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसके 3 से
ज्यादा बच्चे पैदा होंगे एज अपोज टू समवन हु इज नॉट अ चाइल्ड मैरिज। सिमिलरली अगर आप एजुकेशन पे इम्पैक्ट देखें तो जो यंग ब्राइड्स हैं वो ऑन द एवरेज 1 साल कम एजुकेशन हासिल करती हैं। द बिगेस्ट कॉज of missing secondary education becomes of out of schools here, of dropouts becomes early marriage. So मेरा मतलब ये सब चीजें perpetuate होती हैं एक दूसरे की, they're all interlinked। हमें एक holistic approach चाहिए, एक we need a cross cutting cross sectoral approach चाहिए। एक चीज को पकड़ के सिर्फ कानून ठीक करने से चीजें ठीक नहीं होंगी। In my humble opinion, I've given you the example of Bangladesh in our region where this kanun of minimum 18 years has been there for a very long time, and yet Bangladesh accounts for the highest child marriages in our region here. So clearly बहुत सी आपको behaviors, attitudes change करने की जरूरत है जिनमें टाइम लगता है। Attitudes, behavior एकदम से overnight change नहीं होते हैं, but that is what we need to work on and need to engage men in this debate। जो fathers हैं who are the patriarchal heads in families, I think उनको इस debate में शामिल करने के, it is not that कि वो अपनी बच्चों से प्यार नहीं करते। आई थिंक उनको ये आगाही देने की जरूरत है कि जब आप बच्चों की जल्दी शादी कर देते हैं, आप अपनी बच्चियों को जो आपकी बेटी है उसको आप कौन से थ्रेट और रिस्क में डाल रहे हैं। उसमें अब्यूज है, सेक्सुअल डोमेस्टिक अब्यूज है, उसमें हमने फिस्टुला की बात की, हमने फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ की बात की, हमने मैटरनल डेथ की बात की, बिकॉज देयर बॉडी इज नॉट फुली डेवलप्ड इमोशनली और फिजिकली एंड सो फोर्थ। सो मेरा ख्याल है हम सबको मिलके इसके ऊपर बात करनी है, और कानून नाफिज करने वाले इदारों को चाहिए कि वो इसमें मदद करें, जो कानून है उसको प्रॉपर तरीके से लागू करें, जो पनिशमेंट दी हुई उनको रिवाइज करा जाए। पंजाब ने जो अमेंडमेंट की थी चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में, उसमें पनिशमेंट बढ़ाई है लेकिन एज ऑफ द मैरिजेबल एज बढ़ाई नहीं है। सो आई थिंक इन सब चीजों के ऊपर हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। पीपल हु आर इन कॉरिडोर्स ऑफ पावर, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स, उनको चाहिए सामने आए, हमारे असातिज़ा, ताकि हम बच्चों को एजुकेट करें और हम अपने बच्चों के करिकुलम में ये चीज डालें। उनको हम एक छोटी उम्र से बताएं ताकि वो खुद, उनको वो एजेंसी दें कि वो अपने ये खुद अपना डिसीजंस ले सकें। हाफ द टाइम दे आर नॉट अवेयर देमसेल्व्स ऑफ व्हाट दे आर रिस्किंग देयर बॉडीज, पुटिंग अपने बॉडी को किस रिस्क में डाल रहे हैं जब ये जल्दी शादी की रजामंदी कर देते हैं। सो आई थिंक सब साइड्स पे क्रॉस कटिंग हमें यहाँ पे थीम्स पे काम करने की जरूरत है। Okay, one last question since you are short of time. So, एक last question है. So currently only Sindh has and Sindh and the Federal Territory, they have like a law जिसके अंदर 18 साल की I think minimum age रखी हुई है. So no, let me correct you. Okay, sorry, so let me correct you. सिर्फ सिंध में the law has been passed 2013 में, जो कि उस 18 साल मिनिमम एज इसने की है, लेकिन इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में सेनेट ने पास किया था, बट द नेशनल असेंबली में वो पास लॉ नहीं हो सका। जी, it has yes. So with regards to that, ये एक क्वेश्चन है कि do you understand, do you feel कि that the state does it have any political will, या कोई इरादा है कि इसके ऊपर स्ट्रांगली लेजिस्लेट करने के लिए? आई मीन सिंध इज द ओनली वन जो प्रोग्रेसिव लॉज को अभी लेके आ रहा है, एंड द रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस, इवन द फेडरल कैपिटल टेरिटरी इज सिवियरली लैकिंग. सो डू you think that the state has any political will? I think there is आपकी political parties, there's no one political party sitting in your National Assembly right now. आपको पता है 13 political parties हैं that form the PDM right now. So यकीनी तौर पे मेरे पास अभी statistics नहीं है कि which parties opposed and which so they're very progressive parties there also, and there's some more conservative parties also. So you need to work across here and build support across political parties. And I don't think there's any reason अगर उनको ये बताया ना जाए, आगाही ना दी जाए कि इसके harmful effect क्या है. That's why I'm saying कि बहुत जरूरी है कि हम उनके साथ बात करें. और देखिए, जब आप कानून शहादत की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि 18 साल की को शहादत परमिसिबल है, लेकिन जब आप चाइल्ड मैरिज की बात करते हो तो आप कहते हैं नो, शी इज रेडी फॉर मैरिज एंड टू बेयर अ चाइल्ड मच अर्लियर. सो ये तजाद जो है, आई थिंक इसको खत्म करना चाहिए. हमारे वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द रीजन.
ये बच्चे बच्चियां जो हैं ये हमारे असास फ्यूचर का असासा हैं, और इनकी मेंटल एंड फिजिकल वेल बीइंग जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। एज चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, तो मेरी डायरेक्टली जिम्मेदारी बनती है, बट हम सबकी, वी हैव 4 फीमेल मेंबर्स जो आपके गेस्ट हैं, यू योरसेल्फ, आई थिंक मेल भी हो, हमारे बच्चे हो या बच्चियां, हम ज्यादा बात बच्चियों की करते हैं, लेकिन लड़के भी लड़कों की भी जो मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट एंड इमोशनल हेल्थ उतनी ही जरूरी है। ऑल्दो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में हमने ज्यादा बच्चियों में, गर्ल चाइल्ड में अंडर एज मैरिज का रुझान ज्यादा देखा है, जिसको हमें करेक्ट करने की जरूरत है, and we need to push this agenda forward as fast and as soon as possible. I think this is just one check there. As I said, legislation is one check. उसके साथ हमें बहुत सा और मजीद काम करने का साइमल्टेनियसली जरूरत है। आई एम अ पॉजिटिव ऑप्टिमिस्ट एट हार्ट, आई लाइक टू सी द ग्लास हाफ फुल, और मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर जहां जहां लेजिस्लेशन के ऊपर भी काम करें और एक पॉजिटिव ट्रिजेक्ट्री दिखाएं और कायम करें, वहां पे हमें बाकी जगहों चीजों के ऊपर भी एजुकेशन पे, एडवोकेसी पे, अवेयरनेस पे उसी तरीके से काम करने की जरूरत है। And I think we need to find role models to help raise this voice and carry this message forward. Thank you so much, Ms. Aisha Raza Farooq. We will carry on the conversation with Dr. Azbanaz and Dr. Maniza Bano. Thank you so much for giving us your time. Thank you. Thank you. All the best. Thank you, Ji. Okay, Allah Hafiz. Okay, thank you so much for joining us, Dr. Maniza Bano. I will begin with a question, and फिर I will take it back to Dr. Azbanaz. So अभी हमारी बात हुई है कि सेनेटर आयशा रज़ा फारूक ने, और उन्होंने बताया कि बहुत सारे एग्जिस्टिंग challenges है जिसके अंदर we need to join hands, that a collaboration, coordination basically said ke is the need of the hour. So what do you as executive director of Sahil, what are the foremost civil society organizations working on child sexual abuse and child marriage cases as well, आपको क्या लगता है कि कौन से common challenge जो exist करते हैं when you try to counter or address a case of early child or early or child marriage? Yeah, thank you so much. I'm so sorry. I had to apologize. I was actually had to travel, so I was in the car and I didn't know I had to click my name to get into and enter. So that was what was going wrong, and I'm sorry I missed Aisha's information, because that would have been also useful. जी देखें, बात ये है, we have to understand that this is a deeply entrenched cultural issue. It is, and it has many, many reasons behind it. I'm not sure what Aisha has already said, but just I may be repeating that we have to understand that there are many things that are bringing this, keeping this in place, shall we say, because we do have a law. But why is it that this is even so hidden? Because the number of cases we get is nothing compared to, I'm sure, what is happening. Because if we say we are getting 100 cases a year, can you multiply it with the average number of girls who must be at that age, and then think how many must be going in for marriages? बात ये है कि जी अगर आपके इतना आपको लगे कि जी बच्चियां जो हैं वो सेफ ही नहीं हैं from any kind of sexual abuse, especially if they are not in their home of marriage. ये एक बहुत बड़ा मसला है. And this is why we say this is a form of sexual abuse, because under 18, if a child is being exposed to a physical relationship, it is like abusing the child. But yeah, so if you are so scared that your girl may get involved or trapped into having a relationship, then that will be your first reason for making her get married early. Second, you know that we consider girls basically as other people's property.
because we say कि जी ये जाना तो इसने दूसरे घर में है, तो एक तो खर्चा ना हम इतना करें और उसको वहां पे जल्द से जल्द पहुंचा दें। एक तो ये भी बहुत बड़ा पुश फैक्टर है, ठीक है ना। Thirdly, when we are not wanting to even educate our girls, or when we do not have the facility to educate the girls, then that again will play a big role, because what are the girls going to do anyhow if they're not going to go in and get married and get into their own homes? So, these, to my mind, are the three major push factors. So, I don't know if I've answered your question or whether I've repeated what Aisha has said, but you can ask me No, anything more if you want. Thank you. yes. So you आपने ना cultural aspects और जो family का जो influence है उसकी बात की थी. So my question related to that, Dr. Azban asked. So आपने you know the psychological effects of like young brides and child marriages. So आप क्या कहेंगे कि have you ever had the chance to talk to the parents and उनके क्या आपको नजर आते हैं कि what are the psychological पीछे एक push जो होता है that compels them to take such harsh steps or treat the girls like that and push them into these kind of roles? Okay. So basically, definitely we had talked to the parents. Definitely we had talked to the families as well. और जो एक major cause नजर आता है definitely financial constraints. Financial constraints की वजह से definitely they really want कि वो जो जितनी भी spend they would make it on the guys क्योंकि वो उनको एक थोड़ा सा होता है कि they would be a bread earner, they would be a right hand of their father as well. तो जो उनकी बेटियां होती हैं उन्होंने तो दूसरे घर चले जाना तो why to spend on them? So yes, that is the most common cause is financial constraints, and the second is कि जितनी जल्दी अपने ऊपर से बोझ हटाया जाए और जितनी जल्दी अपने ऊपर से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हटाई जाए उतना ज़्यादा बेहतर है. So we have seen so many cases in a way कि जिसमें उन्होंने अपनी बेटियों को उन्होंने उनको sell out किया होता है to other cities, to other countries as well even. और ये बहुत ही common है. पहले शायद इतना नहीं होता था, but अभी या मे बी पहले भी होता था, but अब ये नज़र आता है. अभी लोग उसके बारे में बात करते हैं. We have seen so many people जो कि like if I'm working in Punjab side, we have seen so many people जो कि किसी और ट्राइब से हैं who are unable to understand the language of Punjab. कोई भी उनको language उर्दू पंजाबी सराइकी कुछ भी नहीं आती है, but they are staying with those families and they are going through the depression, anxieties, and they are going through the conversion fits just because of the stressors. First is definitely language barrier. Second is definitely relationship is again a very stressful thing, which is the fourth stressful event जो कि depression या anxiety को cause करते हैं क्योंकि जो एक मैरिटल रिलेशनशिप है दैट इज़ नॉट एन ईजी थिंग. उसमें बहुत सारे हार्मोनल फ्लक्चुएशंस भी होती हैं, आपकी मूड फ्लक्चुएशंस भी होती हैं. हैंडलिंग इज़ डिफ़िकल्ट. सो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स इज द बेसिक रीजन जिसमें अगर पेरेंट्स को अगर फैमिली को पैसों की ज़रूरत है तो डेफिनेटली दे विल मेक इट कि दे विल सेल द डॉटर और दे विल मेक द मनी आउट ऑफ इट एंड दे विल प्रोवाइड ऑल दोज लाइक जो एक उनको अपने घर पे फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं या उन्होंने जो अपने बेटों को प्रोवाइड करनी होती हैं वो उनको प्रोवाइड करें. बट अगेन आई वोंट से दैट दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द गर्ल्स. We have seen boys as well, so I won't say it's just like a one gender thing. We have seen boys as well जिनको फादरली फिगर में देखा जाता है who would be the bread earner for the family. उनको भी अर्ली मैरिजेस में या अर्ली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंड ओवर कर दी जाती हैं और just because of the stressful events definitely they do also collapse as like girls. So this is something which is common and that is mostly because of the financial constraints of this country. Okay, आपने ये कहा कि boys are also impacted, but is there a difference in how girls are impacted as opposed to boys? क्योंकि in most जैसे साहिल भी ये corroborate कर सकता है research, child marriages में especially in young early marriages में it's usually the girls, the young brides जिनकी एक sexual exploitation होती है, so that is like an added dimension of stress and psychological impact. So how do you see boys and girls? इनमें क्या ज़्यादा फर्क नजर आता था आपको?
ओके सो आई वुड से कि सिर्फ जो गर्ल्स हैं वही इम्पैक्टेड होते हैं, बॉयज़ भी डेफिनेटली इम्पैक्टेड होते हैं. फर्स्ट इज़ लैक ऑफ एजुकेशन. आपके पास एजुकेशन ही नहीं है हाउ टू टेक दिस रिलेशनशिप. आपके पास एजुकेशन ही नहीं है हाउ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ दिस रिलेशनशिप. तो स्ट्रेसर्स हैं. आप इमोशनली जब आप कोलैप्स करते हैं तो फिर आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स करता है. ठीक है, तो वो सिर्फ गर्ल्स का इमोशनल डैमेज या सिर्फ बॉयज़ का इमोशनल डैमेज, डेफिनेटली इम्पैक्ट जो होते हैं वो पूरी फैमिली पे जाता है या पूरे उन दोनों उस कपल पे जाता है. और फैमिली इज़ समथिंग लाइक वो उनको उसमें उसमें इंडल्ज तो करा देती हैं बट दे डोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्दर. रिसर्चेस डेफिनेटली शो करती हैं कि हमारा जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सोसाइटी, दैट इज़ अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी. सो दैट मेक सेंस कि ठीक है गर्ल्स जो हैं वो ज़्यादा उसमें सफ़र करती हैं, यस, बट बॉयज़ आर नॉट इवन लेस एज वेल. Okay, Could I add ma'am. something to that, Asra? Sure, Could I sure. add We something? just yes, we are getting to you. But if you'd like to add, respond to this, by all means, go ahead. Yeah, I would just like to add to what Azba said, which is absolutely correct. The other pressure, first of all, in our what we are seeing in our data is that the boys are much less in early marriages than the girls, which means that they're marrying much older men. So that is one thing we see. Second is that the boy, yes, of course, he goes through maybe much worse in a way because he is now under pressure to support his own family, his own mother, father, whoever, and then he's under a lot of pressure that are you favoring your wife or why are you spending it here? उसके लिए तो एक किस्म का डबल प्रेशर है. लड़की पे भी तो बहुत है, वो तो कोई शक ही नहीं है, उसकी तो सेहत वगैरह सब खराब हो जाएगी, मगर लड़के पे भी एक बहुत प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर, pressure for attention, pressure for expenses. I mean, I think that they suffer a lot also, as Azba is saying. ठीक है. So, if we are going to talk about the response to trying to curb, because throughout this discussion we have noted that there is an overall a negative impact. There is a financial negative impact, social, psychological, physically. There is absolutely no good positive side to earlier child marriages. So, like organizations like Sahil or other activists, individuals who are working towards curbing child marriages, what sort of the cultural sensitivities that what do you see, what do you have to tackle, especially when you have to advocate against child marriages and early marriages? Dekhinji, what is it will take a long time for this to change, this attitude to change. But to change that attitude, of course, a lot of awareness on how harmful it is, a lot of awareness that there is a law against it, and those cases should be highlighted so that people understand that this is just not acceptable. But it will take time because unless we change the other dynamics also, that is, as I say, education, a value for the education, and the education value will only be when we have improved our curriculum for these children, girls up to class 10. Because इस वक्त अगर आप देखें, what skills do those children come out with? Nothing. They don't know critical thinking, they don't know about their nutrition, they don't know about health, they don't know about childbearing, they know nothing. So our curriculum in itself does not help to support the girls to understand why they should hold, why should they say no to early marriage also. So all these things would have to be put together for us to hope that there would be a sea change in this. Okay, we have actually reached the end of our webinar. So my one last question to both our participants would be, what would be your recommendations as experts in your field to curb or address the existing negative consequences of early and child marriages? So we can begin with Dr. Azbanaz or Dr. Minizabano. Would you like to? Yeah, Dr. Azbanaz, baat kar le. All right. Oh.
So actually, I would say that there is no better way than to educate people. Definitely, जैसे डॉक्टर मुनीज़ा ने कहा है कि we have to educate people. आप किसी के core beliefs को challenge नहीं कर सकते. जो उनके core beliefs हैं वो वहीं पर ही रहेंगे. But what we can do is simply educate them. We have to tell them what are the pros and cons of the early marriages. अब जब आप एक किसी बच्चे को early marriage में आप indulge करते हैं तो उसके फ़ायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं. From their education, they can definitely process the whole thing कि early marriages important है या we have to educate our kids first कि how to take this relationship, how to take this responsibility. This is basically for the both genders. ठीक है. हमारे यहाँ पे वो फिर एक जो element है, that is the frustration. फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, फ्रस्ट्रेशन है, देयर आर सो मेनी बैरियर्स जिसकी वजह से हम लोग साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ के शिकार हो जाते हैं. हमें बच्ची का जो उसका कंसेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत सारी जगहों पे नहीं लिया जाता है. आइदर दे वांट टू परस्यू इट विद द रिलेशनशिप और नॉट. उनको एजुकेशन जब आप जो बेसिक एजुकेशन आप वो उनको नहीं देंगे तो डेफिनेटली उनको पता ही नहीं कि उनके राइट्स क्या हैं. So first, definitely we have to work on this education, basic education. Why it is important? Because we have to lessen the impact कि psychological जो vulnerabilities हैं वो इस वजह से कितनी ज़्यादा हो सकती हैं, suicidal rate कितने ज़्यादा हैं just because of this कि जब आपकी self evaluation start होती है, once you see yourself कि you are the failed one, आप relationship एक नहीं carry कर सके, आप एक responsibility carry नहीं कर सके, and you start evaluating yourself because eventually होता है कि हमारा जो एक individuality है that is above all. हम लोग 10 लोगों को साथ इकट्ठे लेके नहीं चल सकते. हम जब तक खुद नहीं फर्म और स्ट्रेंथ एंड स्टैंड करेंगे तब तक हम फैमिली को भी नहीं लेके चल सकते. और वो तभी चल सकते हैं जब आपकी डेफिनेटली आप खुद कॉन्फिडेंट होंगे, आप खुद एजुकेटेड होंगे, फिर ही आप एक फैमिली को कैरी कर सकते हैं. आप खुद एजुकेटेड नहीं है तो डेफिनेटली यू कैन नॉट कैरी दैट फैमिली एज वेल. Dr. Vanisa, your thoughts, your recommendations? Ji, if you want to bring about change, you have, and especially when something is so embedded in the mind, तो बहुत जरूरी है कि आप जिस तरह आप देखते ना कमर्शियल एजुकेशन प्रोडक्ट्स के लिए क्या होता है, एक आपको ब्लास्ट मिलती रहती है कि बस यही है, ये ठीक है, ये करो, ये ठीक है. इसी तरह कोई सोशल चेंज हम चाहे ना तो इतने ही जोर से वो हर तरफ से उनको एक ही मैसेज आना चाहिए कि दिस इज रॉन्ग, डोंट डू इट, इट्स हार्मफुल, and change your way of thinking. So for me, that is actually the base if you want to really try and change and bring an impact, to put it very simply. Okay. Thank you so much everyone for giving us your precious time. आपने इस webinar के लिए काफी अच्छे recommendations, and I think it was a very productive conversation with all of you. And thank you all so much as well for all the work you do. Thank you. It was an absolute pleasure. Thank you so much. Thank you for calling us. Thank you, Ji. Assalamu alaikum. Okay. Allah Hafiz and take care. आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net